Okay, found. Okay. So, chaliye, we are live on YouTube. Hello and welcome for day 4 in day 4 of online workshop of making this fish. Right. So, in day 1 we had done part 1, 2, and 3. Day 2 we did part 4 and 5. Day 3 we made part 6 and 7. Right. Now today is the day 4 and we'll be making part 8 and 9. Breaking. Lera. The video is breaking. My video is breaking. No, it's clear. Ranjani, please can you check your side? Is it breaking? It's clear, Andy. It's clear. Okay. It's clear. So we are going to start our part 8. Okay, so let me shift the camera, switch on the camera to that side. Just a second. Okay, and I am highlighting that video, spotlighting for you all. Okay. Fine. So today we are going to do this part number 8 and part number 9. Okay, so part 8. If you keep your fish like this, if I show you, this is the face, go in the center line. This is the center line, this is the right side, this is the left side. Okay, every time you start a group of block or a combination of block, you start from the right side. Okay, this is the right side or the right side of the fish. So right side ke right se hi start karna hai. Okay, every time you will start from the right side. From here also, this was the block, we started from this side, the right side se hi shuru kiya tha, making this portion, and from where I have finished off my yarn, and there only I started the next block. Okay, like this, started from here, finished this, and from here I started from middle. This portion will be started from middle. This portion will be started from right. So whenever we start our new block, that is started from the right corner. This is the right corner, this is the right corner. This is the right corner, this is the right corner. Okay, so now I'm going to do these two portions of this fish. Yellow portion we are going to do first. This will be started from the right corner, right stitch. Okay. ठीक है मैम, अब किसने पूछा था, is it clear ना? Yeah. Okay, clear. Don't get confused at any time, because every time we have to start from the right side. Whether it is this portion, whether it is this portion, this is also on the right side. This portion, when you finish, this right side, you will start. Okay? Chaliye. This is having a more vigorous decrease, because here we were giving some blocks, space or some stitches, but here we are continuously decreasing. So now I'm going to start this fish we had done yesterday. So attaching whatever color you are want to attach, take the yarn. This first stitch, this first block is chain 3 plus 2 double crochet. So on the top of chain 3, attach your yarn. Okay, or the first stitch on the right corner, attach your yarn, chain 3. Okay, part That number will be 8. Part 7, no? This is 8. If I consider granny square as part 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is Okay, 6. so now it is 8 and last one is 9. Okay? Because in the pattern also I have written part 1 as granny square, part 2 as this portion, part 3 as this portion, 4 as this portion, 5. 4, 5. So I mean, now 4 rows it is little bit different. Why? See, Black This one is is one, black two. one.
Huh? 2, 3 and this is the red. 3, 3 is the red. 4. नहीं मैम, black one is the first. ठीक है, तो light blue is the second. Yes, second. Red is the third. Third. Green is the fourth. Fourth. After that, blue is fifth. Yes, 5. Sixth is your green. 6 and 7. हाँ जी. Red is 6 and 7 now. हो गए ना. Now we are going part 8. Okay, start with chain 3 and you reach the first space. In this first space, make 2 double crochet, only 2 double crochet. Don't complete the full block. Okay, chain 3 and 2 double crochet in the first stitch. Okay, now make chain 1 and 3 double crochet in each of the chain spaces below. You will end up with chain 1 and 1 double crochet in the last stitch. Amarji, sorry, can you repeat it? Yes, we have to start with chain 3. Let me reduce the light a bit. अभी दिख रहा है ना, clear है ना? Start with chain 3 and 2 double crochet in the first space. Do not consider this space as chain space, please. After 3 chains, no need of one more chain. After 3 chains, skip the 2 double crochet below and come to the first chain space. This is not a chain space. Please, all of you take care of this thing. This is not a chain space. This was like a full, a complete block. 3 double crochet, I would say. Okay, so this is the first space. Here we will make only 2 double crochet, and after that chain 1 and 3 double crochet in each. Some sound is coming. Somebody. Jyoti, can you mute everyone? किसका था आवाज? Starting, Jyoti. हाँ जी. Amar. हाँ जी. Sorry, I missed it. So after the third chain, immediately you have to make. Immediately skip the 2 double crochet below and in the first space over here. Oh, okay, this is not a chain space. Please, all of you take care of this thing. This is not a chain space. This is the first chain space. This is 3 double chain 3 and 2 double crochet in the next space. That is why you can see it is a space, but it is not a space. Okay. Okay. Chain space makes when you make 4 chains, then it was 1 chain space over there, but there are only 3 chains we had made, right? So chain 3 and in the next chain space, the first chain space, only 2 double crochet, and then chain 1 3 double crochet, chain 1 3 double crochet, repeat till end. And you will end up with chain 1 and 1 double crochet on the last stitch, because there is a block in the middle. That block we have to skip, and on the last stitch, on the last what was it, the last stitch, this, the top of chain 3, make a single double crochet in the last. Chain 1 3 double crochet, chain 1 3 double crochet, chain 1. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए. Excuse me. हाँ जी. मैडम एक बार बताइए ना starting, मैडम. I'll join just. जरूर. When you start, attach the yarn in the top right corner. Okay. ठीक है. Start with chain 3. Okay, ma'am. Okay. Skip the 2 double crochet below. Okay. And then in the first chain space, do not consider this space as chain space. Okay. ये नहीं है chain space, ये वाला chain space. Make only 2 double crochet. Okay, ma'am. Got it, madam. Thank you. Then chain 1 3 double crochet, chain 1 3 double crochet. Okay. Till the end, and you will end up with chain 1 and 1 double crochet on the top of the last stitch. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome.
This is row number 1 of part number 8. Top of the last. Total how many clusters? After making 2 double crochet in the first block, the complete blocks are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yes. 8 complete blocks. Ends with double crochet. And with single double crochet on the last stitch. Chain 1 and 1 double crochet on the last stitch. Okay? Because this portion, this 8 number part, we are not going to do any changes in the middle. This will be straight one. Okay, like these portions as we were doing. But part number 9 will be a decreasing side on this in the center also. See, I will show you over here also. This portion, this yellow portion is straight, but a red portion is not straight. I have made a decrease over here also. Okay, so this portion middle will be straight as we were doing over here in the last 4 or 5 2 to 7 parts. The middle will be straight one. Okay, so shall I start with row number 2? Yes. Okay, start with chain 3. There are 9, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are coming, no? 8 full blocks, and You are not counting? this one I am not counting because chain 3 is made on the first stitch and 2 double crochet in the first block or Okay, first chain space. Okay, So it's ma'am. not a complete block. Yeah. Okay. Okay, so complete blocks are only 8. Ji, thank you. Okay, and this row ends with chain 1 and 1 double crochet on the last stitch. Now let's begin with row number 2, chain 3, turn your work. Immediately there is a chain space or there is a gap. So in this gap, we are going to make a full block. 1, 2, 3. 3 double crochet in the first chain space. So like this, make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 full blocks. Do not make anything in the last block, last chain space. I'll tell you, complete 8 blocks, full blocks, including the first one, separated by chain 1 spaces. Three double crochet, or the fourth block, chain 1, fifth block, chain 1, sixth block, chain 1, seventh block, chain 1, and eighth block, chain 1. Please make till this complete 8 blocks, and the last stitch we'll do together. एक ब्लॉक्स के बाद चेन भी किए ना? हाँ जी, चेन 1 तो करेंगे बिकॉज देयर इज अ स्पेस ना, वहां पे हम कुछ तो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे गैप देना है. चेन 1.
Okay, everybody is done. Yes. Yes. Shall I make the last one now? Yes. Okay, so 8 blocks which ends with chain 1 space. Now make 2 double crochet in the last space and 1 double crochet on the top of chain 3, the starting chain 3 or the last stitch, whatever you say. No chain. No chain. Before that two also no chain. No chain. Okay. In the last space, only 2 double crochet and 1 double crochet on the last stitch. Skip the 2 double crochet below. Amarji, after the 8 clusters, no chain, direct to 2 DC. After 8 clusters, 1 chain, because there should be a space, and then 2 double crochet in the last space and 1 double crochet in the last stitch. This is a chain space. After 8th cluster, there is a chain space, 2 double crochet in the last chain space and 1 double crochet on the top of chain 3 that we started in the last row. Yes. Okay, row number 3. Start with chain 3. Turn your work. Skip the next 2 double crochet below. Only 1 double crochet in the space below, chain space. Okay, now I'm not going to make 2 double crochet in this space because giving a bit more round shape over here. So only 1 double crochet in the space, first space. Okay, third row started with chain 3, skipped 2 double crochet below. In the first chain space, only 1 double crochet. Now chain 1 and start making blocks, full blocks. Reach till the end and your row will end with chain 1 and 1 double crochet on the top of last stitch. Three double crochet, chain 1, 3 double crochet, chain 1. Start with 2 chains or 1 3 chain के बाद 2 DC. नहीं, row number 3. Yeah, start. Row number 3 start with 3 double crochet. Sorry, 3 chains. 3 chains and 1 double crochet in the first space. Only 1. And then 3 double crochet chain 1, 3 double crochet chain 1 till the end. And this row will also end with chain 1 and 1 double crochet on the top of last stitch. Chain 1 and 1 DC on the top of last stitch. Once again repeating row number 3, started with chain 3, skipped the 2 double crochet below, 1 double crochet in the first stitch, then chain 1, 3 double crochet, chain 1, 3 double crochet, repeat till end, and the row will end with 1 chain and 1 double crochet on the last stitch. अभी आप खुद रख के भी देखेंगे तो ये गोल जा रही है, अभी और गोल दिख रही है. अभी इस तरफ को मत देखो तो आपको लग रहा है ये फिश जैसी बन रही है अभी, है ना.
Ma'am, last में one after this last में Last chain one double crochet. See, second row का end हुआ था with a block. Sorry, मतलब second row का जो नीचे इसमें आ रहा है that is a block. तो block के ऊपर chain one और double crochet ही होंगे ना. तो हम लोग इस because this is the end of this row, so only one double crochet on the last stitch. no मैम I'm asking उसके पीछे उसके ऊपर दो डबल क्रोशे की एक है नहीं आपका कहाँ पे? last one Last one is only one double crochet. plus one yeah okay Yeah. Okay, shall we start with row number 4? Yes. अगर कोई रह रहा है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं. My row will fourth will be last row. Your fourth will be the last Follow row. that. Yes, ma'am. I will follow the fifth row. Okay, ma'am. We can start with the fourth row. Who are Sure, ma'am. Sure. So row 4 will start with chain 3. Turn your work. This is actually equal or what we'll say similar with row number 2. Chain 3 to start the fourth row and 3 double crochet in the first chain space. 2, 3. So you have to make full clusters. I'm counting the first one also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Make 7 clusters. First one is also considered. This one is also I'm counting. So 1 until 7. Chain 1 and 3 double crochet in the next space. That is the second cluster. Chain 1. Then no, it's not actually cluster, it is a block. Cluster will be like making 3 double crochet together. है ना? So that is a cluster stitch. Chain 1 and 3 double crochet 4 times. Chain 1 and 3 double crochet 5th times or 5th block. Now making chain 1 and 6th block, chain 1 and 7th block, chain 1, ending with chain 1. The last stitch we'll make together. So that is why I am stopping over here. Make 7 clusters and end stitches chain 1. Okay, shall I do the last stitch? Yes. Yes. After making the chain 1 last time, make only 1 double crochet in the last space and 1 double crochet on the last stitch or the chain 3. नहीं वो रहने दो फिर. I think बनना तो चाहिए. Just a second. Ma'am, how many clusters? 7 clusters. अगर नहीं बनाते हैं, it will not take its shape. So I have to make only 1 double crochet in the in 1 double crochet in the space and 1 double crochet on the top of chain 3. कौन सी स्पेस में? वो लास्ट वाली स्पेस में जो लास्ट वाली स्पेस पे. हाँ जी. जैसे कर्व्ड वाली स्पेस आई है. कर्व्ड वाली नहीं, कर्व्ड वाली ये वाली स्पेस नहीं है, ये वाली स्पेस है. जब आप 7 डबल क्रोशे 7 ब्लॉक्स बना लोगे, the last space is left over here. Okay, understood. ठीक है. In that only 1 double crochet and 1 double crochet on the chain 3. Sorry ma'am, समझ में नहीं आया. After 7 blocks, there is a chain 1. Okay. And then 1 double crochet in the last space and 1 double crochet on the top of chain 3.
So 1 and 1, that's it. 1 and 1, yes. Because if I leave it over there or do not make anything in the space, so this shape will not get okay. So that is why I have to make 1 and 1 over here. Okay. Me, Amarji. One in the space and one on the last stitch. Excuse me, Amarji. Hanji. For the 4 rows, we are doing the 4 rows one thing, no? Hanji. So for us, maybe the last thing we shouldn't do double crochet. We should end off No, with the my single my crochet. 4 row With, here it will stop half here. double crochet, maybe. It will We're start not getting from the shape properly. हाँ, it's getting No. out ना. Yeah. हाँ, अगर एक मिनट बना के देख लेते हैं. Maybe slip stitch करेंगे तो ठीक रहेगा शायद. नहीं, slip stitch will not make good ना. बट इससे क्या है, ये स्पेस नीचे जा रहा है, ये यहाँ से खिंच जाएगा. नहीं, हमें डबल क्रोशे ही बनाते हैं. मैं अगले स्टिच में उसका शेप ठीक कर दूंगी. हाफ डबल क्रोशे ठीक रहेगा शायद. मैम हाफ डबल क्रोशे से ये वाला जो साइज है वो छोटा हो जाता है. हम जो 4 रोज बना रहे हैं ना हमारे लिए. अच्छा, आपका अगर मैं एक मिनट मुझे दिखाइएगा कैसे है. दिस इज हाफ डबल क्रोशे आई हैव डन. एक मिनट ठीक है, दिखाओ. ओके. पूरा नहीं दिख रहा है. ये हाफ डबल क्रोशे किया है यहाँ पे. अच्छा, यू आर डूइंग ओनली 4 रोज ना. हाँ, तो आप फिर यहाँ पे एक मिनट नजदीक में दिखाएंगे क्या. our 4th row will end here. You will be ending with if you make only 1 double crochet. It's not coming nicely, so I have done half double crochet here. Okay. So half double crochet करके थोड़ा सा वो कर्व आ गया. हाँ, तो फिर आप फिनिश ऑफ करोगे अभी इसको ना. हाँ, because we who are doing 5 rows, हम अभी यहाँ पे रो नहीं एंड कर रहे हैं ना, हम लोग इसको अभी और एक रो और बनाएंगे. तो आपका बिकॉज आपको राउंड देना है वहां पे, तो यू कैन मेक अ हाफ डबल क्रोशे आल्सो. ओके, थैंक यू. So this is just kind of adjustment, crochet adjustment I would say. Yeah. हाँ जी. Just to get the shape, no. हाँ जी मैम, हाँ जी. 7 आया ना अभी. 7 क्लस्टर्स के बाद आपने बोला एक डबल 1 डीसी. 7 clusters के बाद chain 1. हाँ. 1 DC in the last chain space. And 1 DC on the chain 3. The last stitch you will say. लास्ट के ऊपर नहीं बनाना है ना, मतलब वो कर्व के ऊपर नहीं आएगा कुछ भी. कर्व आपने नीचे चेन 3 जो बना था उसका जो टॉप 3rd चेन है उसके ऊपर ही तो डबल क्रोशे, वो लास्ट स्टिच ही तो है. ओके. ये डबल क्रोशे छोड़ना है. हाँ, समझ में आया. हाँ, तो लास्ट में बनाएंगे. ठीक है. नाउ डूइंग द 5th रो, start with chain 3. Turn your work. 1 double crochet in the first space. Okay. All of you please see chain 3. 1 double crochet in the first space. Chain 1. 1 double crochet. 1 double crochet in the second space also. Chain 1 we are using in the last row. I'm doing the 5th row as chain 3 to start the row. And then 1 double crochet in the first space. Chain 1 and 1 double crochet in the second space also. The chain 1 is not used in other 5th row, no? Which one? This chain 1? Last row we are not using the chain 1, no? When we ended with 2 double crochet, na? No, in the 5th row I am talking about. See, 4th row we ended with 2 double crochet. Okay, started with chain 3. Last row of the design. This is the last space or the first space of row for row number 5. So only 1 double crochet made over here. Chain 3 and 1 double crochet in the first space. Chain 1 and 1 double crochet in the second space. After that, chain 1 and make proper blocks till the end. And this row will also end with chain 1 and 1 double crochet on the top stitch or the last stitch.
Shall I repeat it once again? Start with chain 3, 1 double crochet in the first stitch or first chain space. Okay, this last row is a bit confusing, I know, but इसमें क्या करना है, because हमें यहाँ पे अब पूरा round दे देंगे यहाँ पे. So chain 3 and 1 double crochet in the first space. After that, make chain 1, and in the second space also only one double crochet. Amarji, sorry to disturb you. My power is just now only back. Can you please tell me the starting of 5th row? Okay, so 5th row will start with chain 3. Okay. Okay, first space, make only 1 double crochet. Immediate gap. Immediate, there is this double crochet you have to skip in the first space, like the last row you have done. Yeah. So chain 3 and 1 double crochet in the first space, Okay. chain 1, Confusing. and again. Yeah. Not understood. Okay, have you started 5th row? Yes, 3 chains and I turn my work. Turn your work. Okay, Yes. so you have found your first chain space. Yes. Yes. Make 1 double crochet in that. Okay. Done. Yes. Chain 1. Okay. Now in the second space, again make 1 double crochet. Okay. 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 So chain 1. Now start making 3 double crochet, chain 1, 3 double crochet, chain 1, and this row will end with chain 1 and 1 double crochet on the last stitch, and you will finish off your work with your yarn. Okay. Okay. So I am going to tell you how many blocks, complete blocks you have to make. 1, 2, 3, 4, 5. 5 complete blocks, and then finish this row with 1 double crochet on the last stitch and cut your yarn. 5 complete blocks separated by chain 1 spaces. Fifth time I am making the block. 1, 2, and 3. Chain 1 and 1 double crochet on the top of last stitch. Chain 1 and cut your yarn. Fifth row is done. Again, I am repeating row number 5. Started with chain 3 and 1 double crochet in the first stitch or first chain space, not first stitch. Sorry. Chain 3 and 1 double crochet in the first chain space. Make chain 1, 1 double crochet again in the second space. Chain 1. After that, in every chain space ahead, you have to make 3 double crochets or a complete block and end your row with chain 1 and 1 double crochet on the last stitch. Now, this has gone in a circular way. Okay. ये जो थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा लग रहा है, when you will make single crochet on all the edges, it will go in a round shape. Don't worry about it. Okay. Now, as I told you in the starting, whenever you start a new color or new block, it always starts with the right side of the fish. This is the right side for this. This is the right side. If I turn my work over this side, so this is the right side, right corner. So here we will start. Okay, for 5 rows, people, they know where they have finished off their yarn. From there, they have to start a new color. Okay, those who are doing with 4 rows, they must know that they have to start with the center line. Okay. Because their 4th row will end up over the outer side of the fish. So let me take the other color.
Now, last part. On this, the middle bone, the middle side is also going to be decreased, and outer side is also going to be decreased. So outer side will be equal to this side. Whatever you have done to the 8th part, the decreasing part will be, the outer part will be similar one. But the middle part, you have to make it a bit straight. वो ज्यादा थोड़ा सा और हमें उसको क्या उसे कहते हैं, decreasing में देना है, so that it will come a bit straight. Like, see, यहाँ पे ये straight आना चाहिए. If I show you this portion, this much fish we have done. So this part is left. ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लुक देना है. तो ये पूरा, ये साइड भी इस बार हमारा वो क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग में जाएगा, ये वाला साइड भी डिक्रीजिंग में जाएगा. ठीक है स्वाति? नहीं, मैं ज्योति हूँ. सॉरी. Okay, attach your yarn in the middle bone or where you have just finished off your yarn. Okay, chain 3. इसमें मैंने देखो chain 3 बना के you have to start our work. Whenever you start, earlier you made chain 3 and 3 double crochet in the first space, है ना? Now we are going to make only 1 double crochet in the first chain space. Okay, now not a full block, only 1 double crochet, because you are going to decrease this. 1 double crochet in the chain space. After that, chain 1 and skip the block below, make a block in the next chain space. Chain 1, skip the block below. Jyoti, excuse me. See? Can you explain again? Okay, start. Attach your yarn over here in the middle. This is the middle. Attach your yarn. Okay. Make chain 3. Okay, because you have to start your row with chain 3. Right? Okay. In the first chain space below, you can see this is a block. This is a chain space. In this, make only 1 double crochet. Okay. Okay. जब आप लास्ट बनाते थे तो पहले स्पेस में ही आप 3 डबल क्रोशे बनाते थे, बट इस टाइम बिकॉज वी आर गिविंग अ डिक्रीज टू दिस साइड आल्सो एंड द लास्ट आउटर साइड आल्सो, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 डबल क्रोशे बनाना है मिडल में. ठीक है, जो फर्स्ट उसकी पहली स्पेस है, 1 डबल क्रोशे इन द फर्स्ट स्पेस, देन चेन 1 और 3 डबल क्रोशे, चेन 1 3 डबल क्रोशे. अब रेगुलर हो जाइए. So how many full blocks you have to make? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 full blocks. Okay. In total, there will be 10 full blocks separated by chain 1 space. 2, 3, chain 1, then 1, 2, 3, 4, 5th block I am making, chain 1, 6th block I am making, chain 1, 7th block I am making, chain 1, 8th block, chain 1, 9th block, chain 1 and the 10th block. 10 complete blocks
ओके स्टार्टिंग में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. Started with chain 3, 1 double crochet in the first space. This is only the starting. Every time you will start a row, this will be started with chain 3 only, but 1 double crochet in the first space I have made. After that, chain 1 and 3 double crochet 10 times. Now you have reached the last chain space, and at the end there are 3 double crochet below. So how will you end? Chain 1, 2 double crochet in the last space, and 1 double crochet on the last stitch. Without chain gap? Without chain. Where? The last one? Yeah, the last Hanji, one. hanji, hanji. So in total, collectively, there are 3 double crochet at the end. So this side, we have to see whatever we have done to this side. This stitch, I had done 2 double crochet in the last space and 1 double crochet on the last stitch. So this will also be similar to this. Okay. Okay, ma'am. When everybody is done, please tell me. We'll start with row number 2. Ready. Everybody done? If anybody is left, we can still wait. नहीं एक बार एक्सप्लेन करोगी अमर? अपने पैसे हैं. एक बार सिर्फ ये रो एक बार एक्सप्लेन करना, पहले 3 चेन. ठीक है, एक्सप्लेन दोबारा से करते. ठीक है, हाँ. ठीक है. चेन 3 हाँ. चेन डाला हमने, स्टार्ट किया हाँ. तो 1 डबल क्रोशे इन द फर्स्ट स्पेस. यस करेक्ट. देन चेन 1 3 डबल क्रोशे, चेन 1 3 डबल क्रोशे 10 टाइम्स, यानी 10 ब्लॉक्स, कंप्लीट ब्लॉक्स बनाए. हाँ कंप्लीट किए. हाँ. ठीक है. देन आफ्टर दैट चेन 1, हाँ. 2 double crochet in the last space. ओके या हाँ हाँ. And 1 double crochet on the last stitch. करेक्ट करेक्ट. हाँ ठीक है. थैंक यू. हाँ चलिए रो नंबर 2, चेन 3, टर्न योर वर्क, skip the 2 double crochet below, reach the first chain space, again make 2 double crochet in the first chain space, chain 3, 2 double crochet in the first chain space. Okay. Row 2 started with chain 3, skipped the 2 double crochet below, 2 double crochet in the first chain space. After that, make chain 1 and 3 double crochet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times. Okay. Chain 1 and full block 9 times. 1, chain 1, second block, chain 1, third block, chain 1, fourth block, chain 1, fifth block, chain 1, sixth block, chain 1, seventh block, chain 1, eighth block, chain 1, ninth block.
explaining this row once again. Start the row with chain 3, skip the 2 double crochet below, reach the first chain space, make only 2 double crochet in that. After that, chain 1 and 3 double crochet in 9 spaces, or 9 times you have to complete the full block separated by chain 1 spaces. When you make 9 blocks, for the last time make chain 1. In the last space, make 1 double crochet and 1 double crochet on the top of last stitch. लास्ट में बताना क्या ठीक है। करना है। आपने 9 टाइम्स ब्लॉक बना लिए? फुल ब्लॉक्स ना, फुल ब्लॉक। सबसे पहली स्पेस में तो आपने 2 डबल क्रोशे डाले थे। हाँ वो नहीं। उसके बाद आपने 9 टाइम्स ब्लॉक बनाए, फुल ब्लॉक्स, 3 डबल क्रोशे वाले। हाँ ठीक है। लास्ट वाला ब्लॉक बनाने के बाद मेक चेन 1 एंड 1 डबल क्रोशे इन द लास्ट स्पेस और 1 डबल क्रोशे ऑन द टॉप ऑफ चेन 3, स्टार्टिंग चेन 3 जो आपकी जो लास्ट में थी, तो लास्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है। रो नंबर 2 इज डन। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, मिडल में एवरी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रो विद चेन 3 एंड 1 डबल क्रोशे इन द फर्स्ट स्पेस। ठीक है। और जब एंड कर रहे हैं तो 1 डबल क्रोशे इन द लास्ट स्पेस एंड 1 डबल क्रोशे ऑन द लास्ट स्टिच। ये वाला सेंटर अब हमारा इस तरह सीधा जाएगा। फिर अभी ये देखिए, it is getting straight one like this. If you see, if I keep my fish straight like this, ये अभी बड़ा होगा, ये इस तरफ जा रहा है, फिर ये इधर को हो जाएगा, right? So give it a straight corner to this side. Row number 3, start with chain 3. Turn your work. And 1 double crochet in the first space. रो 2 एंडिंग है कैसा है? ठीक है। रो 2 ends with, आपने 9 टाइम ब्लॉक बनाया, you have made 9 blocks. Yeah. Make chain 1. Okay. Because after the block you have to make a chain 1. Yes. And 1 double crochet in the last chain space. Yes. And 1 double crochet on the top of last stitch. Okay. ठीक है। Row number 3, start with chain 3. Turn your work. 1 double crochet in the first chain space. After that, chain 1 and start making full blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 times. Okay, 8 full blocks you are going to make now. अब आप पूरे 8 times full block बनाओगे, separated by chain 1 space. Chain 1, 3 double crochet, chain 1, 3 double crochet. 8 times we have to make full blocks now. 1, 2, 3, 4 I have done. Chain 1, 5th block, chain 1,
6th block, chain 1, 7th block, chain 1, 8th block, and chain 1. So those who are making row 4 rows, the middle will be like this only. Chain 3 and 1 double crochet in the first space. And when you end the row, you will end up with 1 double crochet in the last space and 1 double crochet in the last stitch. Okay. The last will not be a full block. Only 1 double crochet will be there. 4 times 4 rows. This will be done. 5 rows, we are also doing the same one, but for the this is the middle part, and the outer side, how they have decreased, that should be equally on the both sides. So everybody done with 8 blocks? Yes. Okay, so row number 3 will end up with 1 double crochet in the last chain space. Sorry, 1 double crochet in the last space and 1 double crochet on the top of last stitch. How many blocks? 8 blocks. Okay. Okay, once again I am repeating this row. Start with chain 3, 1 double crochet in the first space, chain 1, 3 double crochet, that means a full block. Now full block is made 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 times full blocks separated by chain 1 spaces. After 8th block, make chain 1 and then 1 double crochet in the last chain space and 1 double crochet on the top of last. So you are ending with 2 double crochet at the end. मैम हाँ जी, ये आपने कहा 8 क्लस्टर्स ना? हाँ जी, सेम 8 के बाद एक और गैप आ रहा ना? 8 के बाद जब आप 8वां क्लस्टर बना लेंगे, 8वां ब्लॉक बना लेंगे, उसके बाद चेन 1 बनाएंगे जी, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे लास्ट चेन स्पेस में। ठीक है पद्मा मैम, जरा सा आप म्यूट करेंगे, आपके वहां से कोई वो बाइक की आवाज आ रही है आई थिंक। यहाँ से आवाज आ रही, पद्मा मैम के यहाँ से आ रही? मैं देखती हूँ ऊपर में कुछ पॉलिशिंग हो रहा है। ओके ओके मैम, वो बीच में आवाज आ रही है। Yes ma'am, please continue. You can unmute when you want to ask anything, है ना, या you want to talk then you can unmute, otherwise वो वॉइस बीच में आ रही है। ओके चलिए बता रही थी मैं, 8वें ब्लॉक के बाद हम एक चेन 1 बनाएंगे जी, एक डबल क्रोशे जो लास्ट चेन स्पेस थी उसमें बनाएंगे और एक ही हम लास्ट स्टिच के ऊपर बनाएंगे। लास्ट स्टिच के ऊपर? ओके, वहां पे हाँ। भी है ना, इसीलिए डाउट आ गया मुझे। हाँ नहीं वो गैप नहीं है, बट वो गैप इसलिए दिख रहा है बिकॉज नीचे हमने 2 डबल क्रोशे छोड़े थे। जी जी, वो गैप दिखेगा बट वो चेन स्पेस नहीं है। ठीक है, एवरीबडी डन विद रो नंबर 3? यस मैम, है ना? यस। चलिए रो 4 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद रो 4। स्टार्ट विद चेन 3 एंड टर्न योर वर्क। नाउ 1 डबल क्रोशे इन द फर्स्ट स्पेस, यहाँ पे 1 बनाएंगे। ठीक है, चेन 1 एंड फुल क्लस्टर बनाएंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। स्टार्ट विथ चेन 3
1 double crochet in the first chain space, chain 1 and full block 7 times separated by chain 1 space. ठीक है, 7 बार अब बनाएंगे हम फुल ब्लॉक चेन 1 स्पेस देते हुए. 1 2 3 chain 1, 4th block, chain 1, 5th block, chain 1, 6th block, chain 1, 7th block. 7 ब्लॉक्स बनाने के बाद हम इसका एंड करेंगे. मैं आपके साथ ही करूंगी. So I am going to repeat this row once again. Start with chain 3, 1 double crochet in the first chain space, chain 1 and start making clusters 7 times. हिंदी में chain 3 से स्टार्ट किया, पहला डबल क्रोशे पहली चेन स्पेस में बस एक ही डालना है उसमें. देन उसके बाद चेन 1 और 3 डबल क्रोशे हर स्पेस में 7 बार डालेंगे हम. और यहां तक करने के बाद ये रो एंड करेंगे हम. एंड योर रो विथ चेन 1, 1 double crochet in the last space and 1 double crochet on the last stitch. So ये रो एंड होगा जैसे आपने लास्ट ब्लॉक बनाया उसके बाद चेन 1, 1 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे लास्ट स्पेस में और एक डबल क्रोशे लास्ट स्टिच पे. अमर दीदी 1 मिनट रुकना. जी, आई मैं- हैड सम गैप. 1 मिनट में कंप्लीट करती हूँ, थोड़ा बीच में उठना पड़ा. कोई बात नहीं, अब पूछे आप कहाँ पे हैं बता रही हूँ मैं. आप नहीं, मैं लास्ट रो पे हूँ ठीक अभी. है, लास्ट यही वाली 4 रो पे ना. हाँ हाँ. आप स्टार्ट कर रहे हो. नहीं नहीं, हो हाँ, गया, कंप्लीट होने को है. एंड में देखना है मुझे कैसे बनाया. ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ. 7 बार क्लस्टर बना लिया आपने, 7 बार ब्लॉक बना लिया. या बना रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. जरूर जरूर जरूर. अभी फिश का मिडल आपको स्ट्रेट दिख रहा है सबको, सबका स्ट्रेट आ रहा होगा है ना. अभी सीधा हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे वी विल बी मेकिंग फिन. द लास्ट फिश का जो टेल होता है, ये देखिए, ये जो टेल बनाना है हमें, तो ये हमें इसके लिए हमें ये सीधा चाहिए था. अगर मैं इसको भी ऐसे कोने वाला बना देती तो इसके ऊपर टेल नहीं बन पाती. तो इसको इसीलिए सीधा, इसको यहाँ भी डिक्रीज करना पड़ा, यहाँ तो करना ही था. ठीक है. सेवन बनाने हैं ना वो. जी, 7 बनाने के बाद बना लीजिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ. हाँ, एक बाकी है. बनाओ बनाओ. हाँ, 7 बन गए मेरे. बन गए. अभी बनाइए 7th बनाने के बाद अब चेन 1 डालिए. हाँ, ठीक है. ओके. अब लास्ट स्पेस में पहुंच गए. लास्ट स्पेस में आप एक डबल हाँ क्रोशे हाँ डालेंगे. हाँ. अभी एक ही सिंगल डालना है ना. हाँ, सिंगल डबल क्रोशे लास्ट स्पेस में और सिंगल डबल क्रोशे ही लास्ट स्टिच में जहाँ पे या आपने. थैंक यू. Okay. थैंक यू. Okay, row number 5. Shall we start? This is the last row of your fish. मैम बोलो बोलो बोलो. आपने कहा 7 क्लस्टर्स ना, हाँ जी. मतलब एक के ऊपर तो 7 आ गए. कंफ्यूज्ड एक्चुअली. तो 7 के बाद आपने कहा एक है. 7 के बाद चेन 1 डाला. हाँ, फिर उसके बाद लास्ट वाली जो स्पेस है, लास्ट वाली स्पेस. 3 कहाँ से बचे? 3 डबल क्रोशे छोड़ के ना, उसके बाद एक लास्ट वाली स्पेस नहीं बची. I don't know. Can you see on this? एक मिनट, मुझे पहले देखने दो बोल कौन रहा है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है. त्रिशा,
Yeah. अच्छा जी, एक मिनट. 7 times you have made a full cluster. 1 2 3 4 5 6 7. आपका 1 कौन सा है, पहले वो दिखाओ. इधर इधर. वो 1 वहां फुल क्यों हुआ? जब हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन 3 and 1 double crochet in the first space. जी जी. I think she's doing 4 rows वाला. आपने 3 डाल दिए ना. इधर. हाँ, वहाँ पे भी एक है क्या? वहां पे, हाँ वहां पे एक है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक. यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है. तो Okay, इन okay. बिटवीन 7 cluster, 7 blocks. 7 आएगा. ठीक Okay. है. तो बिकॉज इस साइड पे भी अगर आप देखो, आपकी जो 4th रो थी, दैट वाज हैविंग ओनली 1 डबल क्रोशे इन द लास्ट स्पेस और 1 डबल क्रोशे ऑन द लास्ट स्टिच. तो Okay. इसी तरह से हम यहाँ पे भी सेम करेंगे. जी जी. ओके ओके. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम. चलिए. ओके. तो अभी शिरीषा फिर आप बना लोगे कि मैं वेट करूं? Please continue. Please continue. Okay, you have got ना, you have to make only chain 3 and 1 double crochet in the first space, और लास्ट में भी यही करना है इस टाइम पे. ठीक है. So row number 5, chain 3, turn your work, and only 1 double crochet in the first space. See, in the middle we have not changed our sequence. Chain 3, 1 double crochet in the first space, or 1 double crochet in the last space and 1 double crochet in the last stitch. So this I have not changed. This will continue till the 5th row in the middle. Okay. So row number 5 started with chain 3 and 1 double crochet in the first space. Now you have to make chain 1 and 5 clusters only. Everybody please take care of this thing कि इस बार आप सिर्फ 5 क्लस्टर्स ही या 5 ब्लॉक्स ही बनाओगे. क्लास मैं जब तक ओके. थर्ड ब्लॉक, हाँ थर्ड ब्लॉक आई एम मेकिंग. chain 1, 4th block, chain 1 and 5th block. Row number 5, start with chain 3, 1 double crochet in the first space, chain 1 and 3 double crochet in the first space. Repeat this for 5 times. That means 5 full clusters. हिंदी में चेन 3 से स्टार्ट किया, एक डबल क्रोशे पहले स्पेस में डाला, फिर चेन 1 और 3 डबल क्रोशे चेन स्पेस में डाले 5 बार. 5 ब्लॉक्स बनाएंगे. देन उसके बाद एंड कैसे करना है वो हम इकट्ठे बनाएंगे. पहले ये 5 ब्लॉक्स बना लीजिए. मैम श्रीषा जी. हाँ जी बोलो. सो आपने कहा थर्ड फोर्थ वन, फोर्थ वन बोल रहे थे ना आप कि 3 के बाद एक बार देखिए, बिकॉज मेरा यहाँ पे नहीं बनाना ना, यहाँ पे नहीं बनाना, मेरे को ऐड करने दो. हाँ जी, यहाँ पे नहीं बनाना. वी हैव टू मेक इट हियर. मेरे को दिख नहीं रहा है, कैमरा में नहीं आ रहा है यहाँ पे. हाँ थोड़ा सा इधर करना था. हाँ आपने स्टार्ट किया 4th वाला ना जी. 3 चेन के बाद यहाँ पे नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे करना सिंगल. आपने बीच में चेन 1 दिया 3 चेन के बाद ना दिया, यहाँ पे दिया. दिस इज थर्ड वन. फोर्थ वन अच्छा 4th वन अभी बनाओगे ना, तो वहां पे आप बनाओ. चेन 3 डाला, हाँ इसमें डालोगे, इसमें डालो, इसमें हाँ इसमें सिंगल आएगा ना. हाँ इसमें सिंगल डबल क्रोशे डालिए. 4 5 6 7. ओके नाउ आई गॉट 7. हाँ अभी 7 आ जाएंगे, तो लास्ट में सिर्फ एक डबल क्रोशे और एक ऑन द लास्ट. जी थैंक यू वेरी मच. वेलकम. You got 6 or 5? In the last row? Only 5. In the last row, there are only 5 blocks, full blocks. This is the starting one, chain 3 and 1 double crochet in the last, in the first space.
Where did I make a mistake? I can't find only. सी आपके बाद में यहाँ पे 2 स्पेसेस बच रही हैं. डू नॉट मेक इन दैट. देयर आर 2 चेन स्पेसेस लेफ्ट इन द लास्ट. Oh, yeah. हाँ, तो you have to make only 5. Okay. Okay, that is why I told you don't confuse it. Only make 5 and then we'll make the last one. 5. Okay. ठीक है? हाँ. After making 5 blocks, make chain 1, 1 double crochet in the next block, next space, chain 1, 1 double crochet in the last space, and 1 double crochet on the last stitch. अभी हमने सिर्फ एक डबल क्रोशे डाला है. 5 ब्लॉक बनाने के बाद चेन 1, 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, चेन 1, 1 डबल क्रोशे लास्ट स्पेस में, और बिना स्पेस दिए या बिना चेन बनाए लास्ट स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे. तो इसको करिए फिनिश ऑफ. ठीक है, ये होगी आपकी ये रो कंप्लीट. Amar, can you see my एक मिनट, last row 5? एक मिनट मैम, मेरे को ठीक है मैम. आपका आउटर एज, हाँ मिडल में आपका स्ट्रेट आ गया ना. दिस इज द स्ट्रेट थिंग. हाँ, ये स्ट्रेट बन गया है. अमर जी, on the fourth one, last एक डबल क्रोशे and on the top of third one is double crochet. Hello ma'am. कहाँ पे? See here, fourth row. अच्छा, 4th रो पे अभी आप. हाँ हाँ, लास्ट में हाँ, एक crochet and on the top of that double crochet without chain gap. not in the chain gap, on the 3rd chain. Yeah. हाँ, ठीक है. I don't want to be that small. I don't want. Both the sides there are only 2 double crochet you can see. Yeah. My team is also small. 4th row जी. and 5th row. I'll Start tell you with a chain couple of 3. examples. Last month, there have been questions. Ma'am, ask someone to mute. Four Not days, able to hear your voice. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. 5th row, start with chain 3, 1 double crochet in the first space, then chain 1, Okay. 5 5 clusters. Okay. You are left with 2 chain spaces in the last. Okay. In the last 2 chain spaces, make only 1 double crochet. In Okay? each. ठीक है. In each, ma'am. In each. हाँ, in the last 2 spaces. हाँ जी. After making 5 blocks, हाँ. see, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ एक बार. ये 5th ब्लॉक है मेरा. हाँ. चेन 1. हाँ. और ये वाला पहला डबल क्रोशे एक ही डाला है. one double सिंगल क्रोशे. हाँ, 1 डबल क्रोशे, सॉरी सिंगल वाला. 1 डबल क्रोशे. फिर चेन 1. फिर 1 double crochet in the last space. Okay. And 1 double crochet on the top of last stitch. Okay, thank you ma'am, thank you very much. Anybody here? किसकी आवाज आ रही है? सुमा महेश. एक मिनट. हाँ जी, सुमा मैम. थोड़ा सेंटर. ठीक है. हाँ जी मैम. वेरी नाइस. हाँ जी, आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ. पहले हम गैलरी व्यू में जाते हैं, उसमें फिर मेरे को दिख रहा है कौन दिखा रहा है. हाँ जी. Very interesting. And then तनिष्का. हाँ जी, नाइस. शारदा मैम, नाइस. रंजनी मैम, वेरी नाइस. लवन्या मैम का भी बना, वेरी नाइस. चारवी, वेरी नाइस. और नंदनी मैम, आपका स्ट्रेट पीछे. हाँ, पीछे वो भी सीधा है. वेरी नाइस. सबकी फिश बन गई है ना. बस उसको टेल देना है so that it can swim.
Yes, Sushmita ma'am. Very nice. Tail and eye. If something else is coming, It looks nice, na? Yeah. Everybody's How to fish base. सबका fish दिख रहा है. A big leaf is ready. If I say it's a big leaf, Can right? you see mine? कौन बोला है पूर्णिमा. भाई? हाँ जी पूर्णिमा. पूर्णिमा मैम. हाँ जी मैम. Very nice. Nice. Correct. Okay. Yeah. Correct. Thank you. सुनीता मैम. हाँ जी. सुनीता मैम का तो पूरा लीफ लग रहा है. It looks like a leaf because it's green in color. Lakshmi ma'am. Yes ma'am. Correct. Correct. So if you want to make a leaf table mat, it is perfect for that. You give the colors of green, तो वो आपका लीफ बन जाएगा. एक के साथ एक फ्री. Right? Vegetarians will have. Yes, those who are vegetarian. हाँ, जैसे आपने टेबल मैट देखा होगा, ग्रीन कलर के वो जो होते हैं लीफ की फॉर्म में होते हैं, लीफ की शेप में, प्लास्टिक में भी होते हैं. अगर आप ये बनाते हो तो ये भी टेबल मैट आपके उसके ऊपर लीफ की फॉर्म में बड़ा अच्छा लगेगा. डाइनिंग टेबल पे सिर्फ लीव्स की फॉर्म में होगा. बस ग्रीन का वेरिएशन, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एंड लाइट. 3 shades of green. सुनीता का जैसा है पूरा green. 3 shades of green. Like Sunita ma'am. banana leaf. हाँ. So that can be a, अगर इतना ही छोड़ देते हो, it is a leaf. If you make a tail at the back, वो fish बन जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे मैं वही तो कह रही हूँ, एक के साथ एक फ्री आपको मिल गया मटेरियल. Please check mine, no, Sirisha. ओके. दिखाओ. चलो पहले आपको लाइट करके. हाँ जी. Nice. Now finish it off. Correct है मैम? Correct. Thank you. Center should be the straight one. And sides तो आपकी वही वाला रिपीट हो रहा है जो यहाँ पे sides इसकी हैं हमारी. हाँ जी है ना? Thank you. Welcome. Okay. So hope ये सारा अभी तक जो हमने किया, everybody has enjoyed. Yes. मतलब if there is any kind of doubt, we can still repeat it. हम फिर एक बार मैं वहाँ पे भी उसमें मेरे ख्याल वो पैटर्न तो मैं देती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है. इसमें अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है, किसी को भी कहीं पे, अगर आप कहीं पे भी लैग बिहाइंड हो रहे हैं, आई कैन रिपीट इट वंस अगेन. So tomorrow's task will be the last class, the Zoom class. So in that we will be making the fin or the tail, the eye. For that eye, you have to take a small amount of white and black yarn. ठीक है. तो वो आंख बनाने के लिए ये चीज हम बना लेंगे, because if your granny square is of dark color, तो उसके लिए हम इसका जैसे मैं स्पॉटलाइट करती हूँ तो ये आपको दिखेगा अभी. जैसे ये अभी आप हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर था ब्लैक है तो वाइट. मेरा डार्क है, तो हम बीच में ब्लैक कर दिया, बाहर हमने व्हाइट कर दिया. अगर आप हमारा ग्रैनी स्क्वायर लाइट कलर का है, इफ इट इज ऑफ लाइट कलर, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे. वी विल ब्रिंग व्हाइट इनसाइड और ब्लैक बाहर कर देंगे. सो ये आप वेरिएशन अपने उसमें देखिएगा कि आपका स्क्वायर किस कलर का है. इफ इट इज डार्क तो ये वाला कॉम्बिनेशन, अगर लाइट है तो इसका ऑपोजिट कॉम्बिनेशन. राइट. टेल पार्ट दिखाइए ना. टेल पार्ट ये है टेल पार्ट. We can make Border. as a Border. homework. Can we make eye as a homework? Pardon? This now. Ma'am, I couldn't get you. eye का अगर आप पैटर्न दोगे तो we can make it at home. That's a homework for us. So we can save tomorrow your time sometime instead Sure of ma'am, making sure. it. I'll write in the pattern only. Today So that I will be ready. Pin and the edging part also is there. That edges we have to make ending part like. edges and tail we will make together. Everybody knows how to make the magic circle. I'll give you both the ways. If you can make with the magic circle, or you can make the chain method also. I'll write both the patterns in the, or both the instructions in the today's pattern. So that it will be ready by tomorrow, and then we can just do the other part. You can make it and sew it on the center of this square. Yeah. है ना? That's true. That's Everybody can do that, na?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बना सकते हैं सर्कल में। मैं pattern- Magic circle and what else you said? Which is the other way? if you can make it with magic circle or Yeah. by making chain 4 and like Okay. or 2 chains Okay, और third okay. chain में वो मैं Okay, लिख दूंगी। okay, वो don't okay, worry, okay. मैं लिख दूंगी, Understood. मैं खुद Yeah, understood. हाँ इस टाइम पे नहीं बता रही। Means we need to make eye separately and then attach it to Attach it, fish. yes. Ma'am. You have to stitch it at the back, like see ये देखो पीछे दिख रहा है stitches इसके, Okay, ठीक है? तो वो मैंने stitch किया है। I have not glued it. I have not glued it. It's just stitched it. ठीक है? If you want to use the googly eye, that is also an option. You can use the glue and then attach googly eye over there. If you want to make it a long term kind of fish, so आप इसके ऊपर बनाने के बाद ये, and this is made with half double crochet actually. Ma'am, you did magic circle, then okay. I'll write a pattern भाई, Okay, okay. जल्दी है। Magic circle में 10 half double crochet, then 2 half double crochet on each of the stitches. Okay, okay. अभी मैडम खुश है, ठीक है तनिष्का? Okay. Thank you, Amarji, for the lovely class. Yeah, Welcome, thank you, welcome. thank you. Thank Thank you. you, madam. Good night. Bye. Thank you, Amarji. Thank you very much. Thank you. Welcome, welcome. So कल हमारा last day होगा इसके Thank लिए। you. So we'll meet tomorrow at the same time. ठीक है, 4 बजे ही मिलेंगे and we'll complete the whole fish by tomorrow. Sure, sure. ठीक है? Thank you. Sure, Okay, sure. bye. So hope Bye. everybody is enjoying na? Thank you. Bye bye. Thank you, Thank you Amarji. so Bye. much. Have a nice Welcome. time.